both are negatively correlated. So antitatic variable technique is saying that you have to select the pair of observation in such a way they are negatively correlated. Then we combine this particularly both the observation, that is u and 1 minus u. So we have a now total n observation. Then we calculate y is equal to gx, where gx is nothing but the whose integration we are interested to obtain. So we were talking about this example, integration of 1 to 3 e raised to minus x squared dx. And because we have taken the uniform distribution over 1 to 3, then their expected value, or this is actually written as a 3 b minus a, that is 3 minus 1 into e raised to minus u square by 2, that is 2 into e raised to minus u square by 2. And then we calculate the sum over all gx and divide by n. It is giving the estimate of the antitatic variable, and then we find out their standard errors, and it shows that which is actually minimizing the variance. And then we can find out the confidence interval by the estimator plus or minus z alpha by 2 standard error of estimators. Okay. So that we have seen in the last lecture. Now we will talk about the another technique which is known as the control variable technique. It is a variance reduction technique. The name of the technique is control variance. So if you go back to our regression theory, y is equal to beta 0 plus beta 1 x. Okay, so that means x is under control, and based on the x we try to know the value of y. So in this setup we have the same thing, that suppose we are interested to find out the expectation of x, but we cannot directly measure the expectation of x, so we try to measure through some function of x which is known to us. So let us say the fx is known to us and we wish to find out the expectation of gx. So gx is directly difficult to measure, so via fx we try to estimate the expected value of gx. So this is the variable which is known as a control variable. So by using this way we can try to estimate the expected value of gx. So it is just to give you the concept of why the control variable, the name is there. So what the control variable Fourier techniques is saying, that let for a theta cap c, theta is nothing but expected value of gx, and theta cap is the estimate of theta, and because c is that we are using the control variance technique. A theta cap estimate of theta. What is theta? It is the expected value of g of x via control variate, via control variate fx with a known mu equal to expected value of fx. So fx is a control variable whose mean is known to us, and it is a mu, and we wish to find out the expected value of gx using this control variate. For
some function of some function f is given by theta cap c is equal to 1 upon n summation I running from 1 to n g of xi plus c of f of xi minus mu. So this is the estimate for from C. Where x1, x2, xn are IID random variables. Okay. So ultimately our aim is that we wish to find out the theta. So whose estimate is the theta cap, and theta cap is obtained by this particular formula where fx is a some known function which is under our control and whose mean is known as a mu. Different authors also writing it in a different way. Some people is saying that suppose I wish to obtain the estimate of x, if gx is equal to x, but I cannot directly obtain the estimate of x, so I can use the indirect way. So I know the value of y and whose mean. So this is nothing but the my theta cap over n, I running from 1 to n. Okay. So if I wish to find out expected value of x, whose integration is not easy to obtain, but I know that the function fy, whose mean is known to me, so I'm using that concept as a control variable to know the value of x or the expected value of x, so that estimate is given by theta. So different author write in a different way. So whenever it will come to you, you should not worry what it says. So this is mu is nothing but it is a mean of y. So here gx is equal to x, f of x they have taken is a y. So instead of f of x, they are using f of y and then expected value of f of y. Okay, just for your understanding. So now, what about this expected value of theta cap? So expected value of theta cap c is equal to expectation of 1 by n summation I running from 1 to n g of xi plus c into f of xi minus mu. Okay. Uh, Fine. And then we take the expectation inside, and because these all are independent, so this is 1 by n into n of this, so that n will be cancelled out, so you can write it as an expectation of gx because they are IID plus c time expectation of fx minus mu because constant is, so expectation of x is, it is a g of x plus c into mu minus mu. So that is 0. So it is the expectation of gx. And that is nothing but the theta. So it means that theta cap is an unbiased estimator of theta. Theta cap c is an
unbiased estimator of theta. Now, what is the variance? Variance of theta cap C is equal to variance of 1 upon n summation I, it is a g of xi plus c into f of xi minus mu. Okay. So because they are independent, so this 1 upon n outside it is a 1 upon n square, and because this is the independent, so the sum of independent is a independent of sum of variable is nothing but the sum of the variance. So this is the n time, so this n will be cancel out, so it is a 1 upon n variance of, because they are IID, so it is a variance of gx. Okay, I will write it plus c time f of x minus mu. So if you take this n this side, so it is a variance of theta cap. Okay, this is the whole value. N into variance of theta cap equal to variance of gx plus c fx minus mu. So it is equal to n into variance of theta cap c is equal to variance of gx plus c into fx minus mu. So now this can be written as a variance of gx plus this square variance of f of x minus mu plus variance of f of x minus mu. Sorry, this is not the variance. Sorry, this is now it is a covariance plus twice of covariance between c is outside. It is a g of x into f of x minus mu. But we know that g of x and f of x minus, this is the mu is constant. So it is as good as that you can write covariance of g of x fx minus mu as it is a covariance of gx fx. So this is the variance of gx. This is nothing but variance of fx minus mu. Mu is a constant. It is as good as it is a variance of fx. And this is a plus twice of covariance between g of x and f of x. Okay. Now I wish to actually minimize. When you say that this estimate variance is minimum, so I wish to find out the value of c such that this n variance of theta cap should be minimum. Okay. So the quantity h of c is variance of gx plus c square variance of fx plus twice of covariance of gx fx attains its minimum. So how to obtain? Just take the derivative of this with respect to c and equate it to 0. So you will get the value of c. We call them as c star, and that attained at minimum is minus covariance of, you can try, gx fx divided by variance of fx. So now you substitute this value of c star into the theta cap. Okay. Hello, sir. Yes.
सर इससे पहले का जो स्लाइड मतलब पेज था वो बता दो ना एक बार। सर यहाँ नहीं अभी अभी जस्ट आपने जो ये किया ना। हाँ सर वहाँ पे वेरिएंस जी ऑफ एक्स प्लस सी स्क्वायर वेरिएंस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इंटू कोवेरियंस आपने लिया है ना, तो टू ऊपर इंटू सी, टू सी। हाँ वही। यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ पे सी आएगा, सॉरी, इट शुड बी सी, सी शुड बी कंटिन्यू, यहाँ पे भी रहेगा, सी शुड बी कंटिन्यू, ठीक है, बराबर। यस सर। थैंक यू फॉर करेक्शन। So variance of theta cap c is nothing but, if you just substitute that covariance value, it is a 1 upon n variance of g of x, and after substituting this covariance value you will get 1 upon n covariance between gx comma fx whole square divided by variance of fx. Okay, just you substitute this value into this quantity, so variance of gx plus c square, that means this quantity square, one of variance of fx is cancelled out, so it is a minus this. And what about this 2c? But c is, what is c? c is this, so it is a minus covariance gx upon fx, और एक कोवेरियंस यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, माइनस हुआ, ये क्या है, प्लस है, तो ये वन टाइम है, ये टू टाइम है, so that means this is the minus, that is cancel out, so it is a one time, and one time इसलिए यहाँ पे लिखा है माइनस में. But what is the variance of theta cap c? This is, तो क्या हुआ, ये बड़ा हुआ ना, ये क्या है, मोंटे कार्लो एस्टिमेटर का वेरिएंस है, it is the variance of Monte Carlo estimators. If you remember, variance of theta cap mc is nothing but variance of gx upon n. So that means this is the greater, क्योंकि ये इतना पार्ट इसमें कम हो रहा है, तो which is less than or equal to variance of gx upon n, and this is nothing but variance of theta cap mc. So it means that how much variance is reduced when you apply the control variable technique? So this quantity, the amount of variance is reduced of variance is reduced in control variates compared to Monte Carlo technique. Is amount of variance reduced in control variate computer technique Monte Carlo technique is, कितना reduce होगा, तो 1 upon n covariance of gx fx whole square divided by variance of. So this may be asked in an MCQ or Viva or something like that. Okay. So now we try to if we talk about the reduction in variance as per the earlier technique which we have seen, reduction in variance, so that is variance of theta cap mc minus variance of theta cap c divided by variance of theta cap
MC. So it is a variance of gx upon n. This is minus variance of gx upon n, minus minus it is a plus, so it is a covariance square dx fx upon n into variance of fx divided by, it is a variance of g of x upon n. So this will cancel out, this n will be cancelled out with this, so this is a covariance of gx fx square divided by variance of gx into variance of fx, and it is nothing but the correlation square between gx and fx. So this much of the efficiency you can attain. So find out the correlation between gx and fx and find out the square. तो जिसको हमने क्या कहा है रिग्रेशन थियरी में, we call them as R square. So how much variance is reduced in the control variable technique? The amount of variance is reduced in the control variable technique is R square. Is that clear? Yes, sir. So now we will see one example. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो higher the magnitude of correlation higher the reduction. Higher the reduction. So that is how जब भी हम regression use करते हैं तो we always try to see that there should be high correlation between y and x. So similarly in control by variable techniques, we also try to see that there should be high correlation between the gx and fx. Okay? और इसका अर्थ ये हुआ कि when you talk about the in a sampling, there is a regression estimator. So we always try to see that the relation between the y and x, that means y is observed value and x is a auxiliary information. So if the relation between them is high, then we say that we can have the best estimate of the integration. Okay. Now we'll see one example. You have to write the program at your end. Find estimate of integration e raised to minus x squared dx over the range 1 to 3 using control variate. Okay. So here, if we assume u is uniform over 1 to 3, because the range is 1 to 3. So what is the gx? Gx is equal to b minus a into e raised to minus u square. B is 2, 3 and a is 1, so it is a twice of e raised to minus ui square. Sorry, it is a x square. क्योंकि अभी हमें x ही पता पड़ेगा. Okay. तो मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन में किया था ना हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स. तो जी एक्स क्या होता है? इट इज अ बी माइनस ए इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस ए दैट इज कैंसिल आउट, तो इट इज ए रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर.
So let the control variable fx equal to x. Then expected value of fx equal to, you say it is a mu. So expected value of x, fx क्या है, x है, so it is a mu. But what is in our setup? X. So here x is uniform. Therefore, g of u is equal to twice of e raised to minus u square. Expectation of f of u, that we consider as expectation of u, and it is a range is from range is from 1 to 3. So what is the expectation? We know that it is a b plus a by 2, where b is the upper limit, a is the lower limit. It is 3 plus 1 by 2, that is equal to 2. So expectation of u is 2. Okay, and variance of f of u is equal to variance of u, and that is a b minus a square divided by 12. So b is equal to 3, 3 minus 1 square divided by 12. So it is a 4 by 12 is equal to 1 by 3. Okay. Then what is the theta cap? So theta cap c was a 1 upon n summation I running from 1 to n g of x, यहाँ पे अभी क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं u, तो ui plus c star f of ui minus mu. But what is the g of u? So that is you already obtained, I running from 1 to n. It is a twice of e raised to minus ui square. And what is the c star? So c star we calculate, f of u is your u and mu is your 2. Where c star equal to minus covariance between g of u, f of u divided by variance of f of u. So this is minus covariance between g of u is, it is a twice of e raised to minus ui square. This is a f of u is, it is a u divided by f of u is 1 by 3. So can we write it as a 2 is outside. So can we write it as a minus 1 by 3 तो उस साइड ले जाएंगे तो 6 टाइम covariance between e raised to minus ui square u I. ओके, लिख सकते हैं ना, 2 बाहर ले लिया, 1 by 3 is in the this denominator of denominator become the numerator, so 3 2 are 6 and this minus sign. Now this is as good as minus 6 times expectation of e raised to minus ui square into u minus expectation of e raised to minus ui square into expectation of ui. तो ये क्या है, 2 है, तो what you will get, it is equal to minus 6 times expectation of u
e raised to minus ui square, that is ui square minus twice of expectation of e raised to माइनस यू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, एम आई राइट? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू माइनस यू आई स्क्वायर इज कॉमन, इट इज ए यू आई माइनस टू. कैन वी राइट दिस इज ए सिस्टम? सर नहीं सर, क्या नहीं समझ में? सर वो सिंपल है ना ये. पिछले वाले यहाँ पे इतना तो समझ में आया, दिस इज ए टू, ठीक है? तो ये क्या है, हाँ, e raised to ये minus u स्क्वायर u इंटू, हाँ उसके बाद क्या किया है, वो टू है, टू को मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया. हियर भी एक e रेस टू माइनस यू आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन लिया एक्सपेक्टेशन के अंदर ही, तो ये क्या हुआ, यू आई माइनस टू, ठीक है? अंदर माइनस सिक्स इज देयर. ओके, फाइन. यस सर. So now you have to solve the integration and you have to substitute here that value of c star here. Then what is the results you have? Okay. So what is the results you have, that you have to just find out that expected value and substitute here, and then you solve this, you will get this answer. So rest of the parts you have to work out at home. Substituting C star in theta cap C, we get theta cap C is equal to 1 upon n summation I running from 1 to n 2 e raised to minus ui square minus 3 by 2 e raised to minus 1 minus e raised to minus 9 ui minus 2 upon 1 minus 6 by n I running from 1 to n ui minus 2. So this is your theta cap C, that is the estimate of the theta using the control variable technique. Okay. So the algorithm how to generate this variable, how to obtain, it is the simple procedure. Generate the UI from 1 to 3, calculate this, find out their sum, find out this ratio, you will get the theta cap. So how many such you can generate? So you have a, how many such variables are there? So you can generate such variables. How many variables? Let us say n variables are you are generating. So you will get the 1 theta cap. Okay. So theta cap is with you, so you can have the simultaneously variance of theta cap भी मिल जाएगा आपको. जो n वेरिएबल है उसका आप निकालो वेरिएंस जो भी फाइनली जनरेट हुआ है, ठीक है? So that is giving the variance of theta cap C.
तो उसको आपको कंपेयर करो आगे वाले के साथ, एंड यू कैन सी दैट हाउ मच रिडक्शन यू ऑब्जर्व. ठीक है. So that is the rest part you have to perform at home. Calculate theta cap C, calculate variance of theta cap C, calculate standard error of theta cap C, calculate the confidence interval of theta cap C plus or minus z alpha by 2, standard error of theta cap C, and find out the amount of reduction. The amount of reduction is nothing but, how will you find out? You can also find out the Standard error of correlation between the gx and fx and their square. Okay, so gx अपने केस में क्या है, -2ui². fu क्या है, u है. तो you just find out the correlation और उन दोनों का correlation जो भी है उसका square निकालो. That is the amount of reduction. Or you can find out this way, that the standard error of the first estimator minus standard error of second minus standard error of the first, you will get the amount of reduction. Okay. Any questions, anyone? No, sir. So now we will go to the one more technique which is known as a importance sampling. Variance reduction technique is known as a importance sampling. Okay. So if we wish to evaluate expected value of gx, where we cannot generate random sample from the distribution of x. In such situation, importance sampling is useful. The logic underlying importance sampling is sampling is lies in
rearrangement of terms in the target integral. Terms in the target integral. And multiply by 1. For example, suppose we wish to find out the integration of gx fx dx. Okay. Or okay. Then we arrange it in this way: gx fx upon qx into qx, that is dx. So what we did, we have just simply multiply by the qx and divide by the qx. So this can be written as gx, we call them as a wx, qx, where wx equal to fx upon qx. In some books, people are using the notation the hx, expectation of hx fx or hx px. If you go to the other reference book, they are using this notation. You should not confuse with the notation. They are using this is hx px, and then they write this. This is hx, this is px, this is qx, and px upon qx they write as a wx. So this is nothing but in that notation hx, wx, qx. We should not worry about the what is the hx, fx, wx. We should only know that we wish to find out this integration. So this is nothing but the expected value of gx actually. So our aim is that we wish to find out the expected value of gx. So of course fx is a distribution function. Okay. So how to obtain this? So that is the question. Okay. So qx is also a density function, fx is also a density function, and gx is some integral whose expected value we wish to find out. So wx, qx is a density function from where you can easily do the simulation. Okay, fx it is very difficult. What it is saying that we wish to find out expected value of gx, but it is very difficult to generate a random sample from a distribution of x. So let us say fx is a such distribution function which is very difficult to generate a sample from this. So we are not able to find out the expected value of gx. So what we do? Can we have the some other density function qx from where we can easily generate, and then we find out this ratio. We call them as a wx. Okay. तो उसमें अभी बात कर रहे हैं what is the qx px, where qx is another density function
whose support is same as fx, same as that of fx, same as that of. So whatever the support of fx, suppose fx is lies between 0 to infinity, then you have to select the density of qx whose support is also from 0 to infinity. That is the simple space corresponding to px is the same as the simple space corresponding to gx. Sorry, that is the simple space corresponding to qx is the same as the simple space corresponding to fx. Wx is called the importance function. Importance function. A good important function will be large when the integrand is large and small otherwise. So if your integrand is large, the important function should be large, and the integrand is small, then important function is also a small. Okay. So ultimately, in importance sampling, what we do, we actually rearrange the terms. So ultimately, our aim is that we wish to find out the expected value of gx over fx, but it is very difficult to generate a sample from the fx. So what we do, we try to find a density whose support is same as the support of fx, and it is easy to generate a random sample from that. Then we calculate the that particular, we multiply with qx and divide with qx, so we have this ratio fx upon qx is known as a wx, so it is known as a importance function. Okay, so this is where we have to proceed. So it is somewhere, if you look at this, it is a kind of a acceptance rejection structure is also. Okay, and importance sampling is mainly useful when you deal with the estimate of the parameters in a Bayesian inference. So let us understand one example how we can proceed. Consider the function g of x equal to
10 exponent of minus twice of x minus 5. Okay, and I wish to find out the integration, and further it is given gx is this, further it is given that x has the distribution that is uniform 0 1. That means fx is given, fx is equal to 1 when it is lies between 0 to 1, 0 otherwise. So evaluate integration of 0 to 1 0 to 10, not the 1. यस माइक बंद कर दीजिए जिसका शुरू है g of x fx dx. So fx is equal to 1, so we wish to integrate this 0 to 10, 10 into exponent of minus twice of determinant of, sorry, absolute value of x minus 5 this dx. Dx fx equal to 1 is given, so I wish to integrate this. Okay, so how to integrate? कैसे करेंगे? बोलिए. कैसे करेंगे? Can we write this integration in this way? तो यहाँ पे सपोर्ट कितना है 0 to 10. तो fx is 1. ठीक है, तो यहाँ पे आपका gx आपके पास ऑलरेडी ये है, दिस इज 10 इसको आप ऐसे लिख सकते हो.
और यहाँ पे ये जो है मेरी गलती है, यहाँ पे 10 नहीं है। आई विश टू यूज इट ओनली दिस, 10 इज नॉट दैट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे एफ एक्स क्या है मेरा, व्हाट इज एफ एक्स, ये जी एक्स लिखा, एफ एक्स 1 है, क्यू एक्स में ले रहा हूँ यूनिफॉर्म 1/10, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो ये 1/10 का 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 10 इंटू 1/10 dx. So what I do, I will generate a uniform random number from 0 to 10 and then I will find the sum. So this is where it is giving the important sampling. And wx क्या हुआ यहाँ पे, it is the ratio, it is a fx upon qx. So it is a 1 upon 1/10. So that is a 10. Okay. So how to write the R code in this setup if you wish to evaluate? So first generate the uniform random numbers. कितने, तो n equal to let us say 10,000 with range 0 to 10. Then second step is calculate the gx. So what is the gx? It is a twice of, sorry, 10 of exponent of minus 2 into abs x minus 5. Once you have the gx, what will you do? You will calculate the theta cap, theta cap equal to mean of gx and variance of theta cap equal to variance of gx. When you take the density, qx is uniform 1/10. But suppose this distribution is peaked at x minus, here यहाँ पे आपके पास क्या x minus 5 है, इसका मतलब इसकी थिकनेस कहाँ पे मिलेगी आपको, 5 के पास. तो if we take the normal distribution, okay, standard normal, normal distribution with mean phi and variance 1 as a qx, then what happens? तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एफ एक्स इक्वल टू 1 लिया था, हमें सिर्फ ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 10, यहाँ पे एक्स की रेंज हमें दिया है, ठीक है. तो आई विश टू इवैल्यूएट दिस ओवर दी 0 to 10. तो यहाँ पे हमें इसको इवैल्यूएट करना है 0 to 10. इफ वी से दैट इवैल्यूएट gx is equal to exponent of minus 2 x minus 5 over 0 to 10. Here we consider fx is uniform and qx, because it has peak at the normal with phi, so we consider it is a root 2 pi e raised to minus half x minus pi whole square. That is qx is normal phi 1. So I wish to evaluate this integral.
0 to 10 g of x dx equal to, और 0 to x fx dx is equal to 10 into, क्योंकि आपने fx, हमें तो इंटीग्रेशन सिर्फ gx का निकालना था, fx आपने 1/10 लिया तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ए -2 एब्सोल्यूट x -5, रेंज 0 to 10, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया अपना f of x, क्यू एक्स हम ले रहे हैं 1/√2 पाई e raised to -12 x minus म्यू स्क्वायर, और वहाँ पे वापस लिख रहे 1/√2 पाई e raised to -12 x minus म्यू होल स्क्वायर, दिस इज dx। अब म्यू की जगह पे अपना क्या है पाई है, दिस इज लेट अस से पाई। तो ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आई हैव डिवाइडेड, यहाँ पे भी 10 को क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, सो दैट आई कैन ऑब्टेन दिस इंटीग्रल। कर सकते हैं ना कि नहीं? तो व्हाट इज द wx? wx इक्वल टू fx अपॉन qx, तो fx इज 1/10, qx इक्वल टू 1/√2 पाई e raised to -12 x minus 5 होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस है ऊपर चला गया, ये 1/10 नीचे है, √2 ऊपर चला गया, तो क्या हुआ, इट इज √2 पाई e raised to ½ x minus 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो ये आपका हो गया w इज इम्पोर्टेंस फंक्शन। ओके, so this density is written as 0 to 10, 10 into 10, 10 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ minus twice of x minus 5 into √2 pi e raised to ½ x minus 5 whole square into 1/√2 pi that means first we generate x from the normal phi 1 and then we substitute that value into this integral, okay। और यहाँ पे तो कैसे आप करेंगे इसको इवेल्युएट? स्टेप 1, पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन आप बना लेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शन कहाँ पे है? दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ओवर द रेंज 0 to 10, ठीक है, सही है ना? कि नहीं? क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एफ एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो एफ एक्स अपॉन क्यू एक्स इसका मतलब क्या हुआ? आपको x जनरेट करना है 0 to 10 में से, x जनरेट करना है नॉर्मल phi 1 में से, और उन दोनों का रेशियो लो, वो रेशियो आपको क्या मिलेगा? wx मिलेगा। तो दैट इज योर इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो you can say that the step for R code, or you can say that R code लिख सकते हैं कि first calculate the W। तो W is nothing but the function of आपका x है, और function of x में आप क्या कर रहे हैं? You are generating the uniform
इट इज ए डी यूनिट, इट इज नॉट आर यूनिफॉर्म। तो क्या आप क्या कर रहे हैं, दिस इज योर डेंसिटी फंक्शन। ओके, so you are calculating the d uniform, how many observation। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग रेंज इज 0 to 10। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यू विश टू इवेल्युएट दी नॉर्मल। तो अगेन इट इज ए नॉर्मल डेंसिटी, so it is a d r norm or d norm, it is a d norm, you are trying to evaluate x with mean phi and standard deviation 1। तो ये आपका हो गया importance function। Now what is your gx? So gx is equal to, यहाँ पे हमने रेशियो में fx में 10 लिया तो 10 यहाँ पे भी बैठा है ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन में ये 1/2 पूरा लिया है, तो दिस 10 इज हियर, तो gx इज 10 into exponential of this। तो you calculate the function g is nothing but it is a again a function of x, and in function of x it is a 10 into exponent of minus twice of abs of x minus 5। सॉरी, ये ब्रैकेट ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट जनरेट द x फ्रॉम द r नॉर्म, क्योंकि हमारा qx क्या है, नॉर्मल है। तो r नॉर्म जनरेट करें कितने, लेटेस्ट से n, तो n इक्वल टू आप क्या रहे, लेटेस्ट से 10,000 with mean phi and standard deviation 1। वो मिलने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, you wish to calculate this everything ना, ये जनरेट हो गया, this is you have generated from this, so now you wish to evaluate this integral, so that means आप ये कैलकुलेट करेंगे, that means gx into wx, और फिर उसका आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो दैट इज, इसको मैं y कहूँ, इट इज ऑफ g ऑफ x इंटू डबल ऑफ x, एंड देन थीटा कैप इज मीन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ थीटा कैप इज वेरिएंस ऑफ y। Is that clear? Any questions? Anyone? सर बोलिए। सर आर कोड के पहले का सर स्टेप्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे, इम्पोर्टेंट फंक्शन था ना, डब्ल्यू एक्स जहाँ से सर स्टार्ट करे हमने, WX ये वाला यहाँ से, WX सर क्या है, FX अपॉन QX ले रहे हैं, ऊपर चले Yes. जाए यस सर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, GX हमने ये लिया है, FX हमें बोला है कि भाई इट इज 1/10, बिकॉज आई विश टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ओवर द 0 to 10, तो मैंने क्या किया, इसको 1/10 ही FX ले लिया, ठीक है। अब FX मैंने 1/10 लिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई जो FX का जो रेंज है वही रेंज QX की भी होनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था ना। यस सर, बट इफ यू फाइंड आउट द नॉर्मल वैल्यूज, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, वो 0 से 10 के बीच में ही आएगा, एंड इट हैज पीक एट द 5। ओके, तो बाकी की जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो क्या होगी, 10 से ऊपर और उससे 0 से, तो वो निग्लिजिबल होगी। तो वैसा हम मान के हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल QX वाला, ये लिया। अब ये लिया तो अभी इसको इंपॉर्टेंट फंक्शन में हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, GX का हमें इंटीग्रेशन ऑफ GX से निकालना था,
एफ एक्स हमने 1/10 लिया तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा जी एक्स एक्चुअली हो जाएगा 10 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ दिस, तो वो मैंने यहाँ लिखा। ये मेरा जी एक्स, क्योंकि 10 से मैंने डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई। अब ये मेरा एफ एक्स है, दिस इज माई क्यू एक्स, तो क्यू एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो इसको मैंने क्या कहा है डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स मैंने यहाँ लिखा, दिस इज योर डब्ल्यू एक्स। अब ये क्या है आपका, एक्चुअली आपका हो गया है जी एक्स, और ये आपका क्या है क्यू एक्स। तो इट इज सेइंग दैट फर्स्ट यू जनरेट रैंडम सैंपल फ्रॉम क्यू एक्स, लेकिन डब्ल्यू कैसे मिलेगा, तो 1/10 है वो, इट इज ए एफ है वो, इट इज अ डेंसिटी फंक्शन, तो गिवन ए वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो वो मैंने क्या किया डी नॉर्म करके किया, डी यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम रेंज 0 to 10, और यहाँ पे क्या किया मैंने डी नॉर्म किया वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 10 की जगह पे मेरे पास क्या है, आई हैव टू सप्लाई द पैरामीटर्स मीन एंड वेरिएंस, तो 5 1, तो ये डब्ल्यू एक्स मिला, इसको मैंने जी एक्स कहा। अब मैं क्या किया, आई हैव जनरेटेड द रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्स की वैल्यू मिला उसके ऊपर से डब्ल्यू एक्स निकाला और उसके ऊपर से मैंने जी एक्स निकाला, बट अल्टीमेटली ये सारा हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हम यहाँ पे बैठेंगे, तो दैट फॉर दिस मल्टीप्लाई विद दिस, और फिर उसका मैंने क्या निकाला एवरेज। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट फंक्शन में मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, द एस्टिमेट ऑफ थीटा कैप इन इम्पोर्टेंस फंक्शन, it is a 1 upon n sum over I equal to 1 to n g of xi f of xi upon q of xi, or you can say it is a I running from 1 to n 1 upon n g of xi into w of xi। ठीक है, वो ये मैं स्टेप बताना भूल गया, थैंक यू। तो मैंने जी एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स किया एंड देन आई हैव फाइंड आउट दी सम एंड देयर वेरिएंस। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. so that is what I have written in the code कि first I have write the w function, तो w क्या है तो हम जानते हैं fx upon qx, तो this is the fx क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो given a value of x what is the probability of x in the uniform 0 to 10, और ये क्या है नॉर्मल है, तो गिवन वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज नॉर्मल 5 1, तो ये रेशियो निकाला। देन आई हैव कैलकुलेट जी, जी इज क्या है 10 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू एंड जी एक्स का मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन आई हैव जनरेटेड दी 10,000 रैंडम सैंपल फ्रॉम 5 1, क्योंकि मुझे क्यू एक्स से जनरेट करना, आई कैन नॉट डायरेक्टली जनरेट दी फ्रॉम दी एक्स, वैसा है ये सब बता रहा है। तो नाउ थीटा कैप इज नथिंग बट द मीन ऑफ दिस, तो ये जो y मिला है उसका आप सम करो डिवाइड बाय n करो, तो वो आपको क्या मिलेगा मीन, एंड दिस इज द वेरिएंस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी लिखा है ना फॉर्मूला सर, लास्ट में वो दिखा होना चाहिए। ये वाला? हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। So it is very important to take the form of q, that is very important कि आप q का फॉर्म क्या लेंगे। सर हो गए। ओके, तो
अगर टारगेट डेंसिटी आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. So you can divide it by the normalized constant. बाकी rest of the procedure remain the same. Okay. If it is not normalized मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए आपका 1 आना चाहिए. fx इंटीग्रेशन आप लेते हैं fx का 0 to 10 में, तो fx हमारा यूनिफॉर्म है 1/10, तो वो आंसर 1 आएगा. सपोज fx आप कोई भी फंक्शन लिया बट उसका इंटीग्रेशन 1 नहीं हो रहा है या सम 1 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, we have to divide with some normalizing constant so that it become the 1. So there is also a concept of normalizing constant. ठीक है, तो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन और दिया तो कर सकते हैं. तो मैं आपको कहूँ इवेल्युएट दिस, तो कैसे करेंगे. तो ये एक्चुअली क्या है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो दिस इज नथिंग बट दी डेंसिटी ऑफ अ डबल एक्सपोनेंशियल. इट इज ए डेंसिटी. आप इंटीग्रेशन ओवर ये करेंगे 1/2 e raised to minus एप्सिलॉन dx, तो ये क्या 1 होगा बिकॉज इट इज ए डबल एक्सपोनेंशियल. एंड व्हाट यू विश टू कैलकुलेट x स्क्वायर, आपको उसका निकालना है. दैट मीन्स यू विश टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इन डबल एक्सपोनेंशियल. तो आपको fx दिया है, तो व्हाट यू गिवन, यू गिवन gx fx dx. दिस इज माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी इज गिवन. तो आपको क्या करना है, fx की रेंज क्या है, रियल लाइन है, तो कौन सी ऐसी डेंसिटी है जिसकी रियल लाइन है, तो ऑफ कोर्स इट इज ए नॉर्मल. नॉर्मल. तो यहाँ पे आपको qx क्या लेना है, नॉर्मल. तो नॉर्मल यहाँ पे आप qx लो, qx यू टेक नॉर्मल एज 0.4. ठीक है, तो यू टेक qx एज ए नॉर्मल 0.4. तो fx अपॉन नॉर्मल 0.4 पे से डिवाइड करो, यू विल गेट दी wx. gx आपका x स्क्वायर है and qx आपका normal 0.4. So first generate a random sample from a normal 0.4. Substitute that value of x to the fx upon qx. Find out the wx. Find out the gx. Multiply this and then find out the sum. It is giving the minus infinity to infinity x square 1 by this means absolute value of minus x d. तो ये एक आपका प्रॉब्लम है. The solution I have already given. How you can generate. दूसरा आपको बोला है कि ओनली इंटीग्रेट दिस. तो हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, इसका दो पार्ट कर सकते हैं ना आप, 0 to infinity. तो दिस इज माइनस इंफिनिटी है हाफ, तो इट इज ए e raised infinity to x e raised to minus x dx. और यहाँ पे क्या होगा, प्लस x to x infinity. to infinity e raised to, यहाँ पे e raised to x आएगा क्योंकि माइनस पार्ट है तो x बिकम माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा e raised to minus x dx. दोनों में 1/2. तो you generate the
कैसे जनरेट करेंगे? नॉर्मल से आप जनरेट करो, x लेस देन 0 है तो दिस पार्ट विल बी इवैल्यूएटेड, और x ग्रेटर देन 0 है तो दिस पार्ट विल बी इवैल्यूएटेड. तो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द सम, और उसका सम आपको 1 मिलेगा. ठीक है, आई थिंक यू कैन डू इट नाउ.